Good morning, students. Today we are going to see peer profile. Get 10 of your friends to fill in this sheet for you. So we are not in physical school, so you can't do this activity one on one. So if you have numbers of your friends, you can call them and fill this sheet. It's up to you. You can call them or message them, but you have to do this activity. This is very simple. Okay, so what is the peer profile means? Here peer is a new word. So peer means of your same age group, means a person who is of your same age group. So your classmates are of your age. You can call them and fill this with their help. My name. First of all, you have to write your name. Here is one example. Anisha Kishore Ambekar. There is one example. Name of a girl, Anisha Kishore Ambekar. At home they call me. What is your pet name at home? So here is written Sona. My friends call me Nisha. Friends call her Nisha. What your friends call you? So you have to write it there. Some of the things I enjoy. Anisha enjoys swimming and ice cream. So that's why she writes here swimming and ice cream. Some of the things I appreciate means here appreciate means some of the things I appreciate means some of the things I like. Here appreciate means some of the things I like. What Anisha likes music and good handwriting. मीन्स अगर कोई अच्छा गाना गा रहा है या अच्छा गिटार बजा रहा है या अच्छा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो अनिशा को अच्छा लगता है, दूसरों वो पसंद है उसे. और गुड हैंड राइटिंग, दूसरों की अच्छी हैंड राइटिंग. सम ऑफ द थिंग्स आई फियर. ए माउस सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास. अनिशा को दूसरों का म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वो उसको माउस से और सबके सामने गाना गाने से, क्लास में गाना गाने से डर लगता है. सम ऑफ द थिंग्स आई हेट टू डू. कट अनियंस. अनिशा हेट्स टू कट अनियंस. सम ऑफ द थिंग्स आई हैव टू डू. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. means Anisha have to get up early in the morning. Some of the things I will never do. Tell a lie to my mother. Anisha will never lie to her mother and nobody should. Some of my good habits. Brushing teeth twice in a day. Means Anisha's good habit is to brush her teeth twice in a day. Some of my bad habits. Stuffing my clothes in cupboard without folding them. Anisha's bad habit is to stuffing her clothes इन कबर्ड विदाउट फोल्डिंग देम. मीन्स कपड़े सूख गए तो फिर विदाउट उनको फोल्ड किए हुए ऐसे ही कबोर्ड में उसने डाल दिए, तो वो उसकी बैड हैबिट है. माई फेवरेट पर्सनैलिटी. अनिशाज फेवरेट पर्सनैलिटी इज महेंद्र सिंह धोनी. वॉट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस पर्सन. मीन्स वॉट she likes about this person, that is Mahendra Singh Dhoni. Her favorite personality, he is very good captain. Means Mahendra Singh Dhoni was very good captain at his time. You can write Virat Kohli, the current captain of Indian team, or you can write any of the personalities you like. For example, you can write any athlete name or any scientist name or any politicians you like or any actors you like, anyone, your teacher, any personality, means famous personality. Okay, so this is the form which you don't have to fill. It should be filled from your friends. Okay, मीन्स आपको ये जो क्वेश्चंस है ये तो सबको अपने बारे में पता रहना चाहिए, पता होता ही है. तो ये सब आप बातें आपके फ्रेंड्स को आपके बारे में पता है क्या? जो कोई भी 10 फ्रेंड्स होंगे, 10 फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो गए, चलो 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स, आपको आपके 5 फ्रेंड्स को ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं. मीन्स ये जो फ़ोटो है मैं आपको शेयर करूँगी इस वीडियो के साथ, तो आपको उनको ये फ़ोटो शेयर करके
उनको बोलना है कि मेरे बारे में तू क्या क्या जानता है, ये सारे आंसर्स आपको उनसे लेने हैं। नेम, पेट नेम, और वो जो हमको बुलाते हैं वो, अगर आपका नाम से ही आपको बुलाते होंगे तो वही लिख देंगे। और इंजॉइंग, वो आपको क्या पसंद है वो आपके फ्रेंड को पता है, आप किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, वो आपको किस चीज़ से डरते हैं, आपको क्या चीज़ नहीं करना पसंद है, और आपको क्या करनी पड़ती है, आप क्या कभी नहीं करोगे, यार गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, फेवरेट पर्सनैलिटी, और फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हो। ये सारी चीज़ें आपके फ्रेंड्स को आपके बारे में पता है क्या, तो ये आपके फ्रेंड्स को शेयर करके आपको उनसे पता लगवानी है। After you have collected the filled-in sheets from your friends, go through all of them and make notes for each of the points. Use the notes to write a report about your friends, likes, dislikes, habits, favorite personalities, etc. You can present your report orally or in writing. Remember the following things when you make a written or oral presentation. अब देखो ये सारी चीज़ें, अब जैसे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे वैसे ही आपके फ्रेंड्स भी आपको शेयर करेंगे, तो आपको सबकी चीज़ें सब पता चल जाएंगी कि उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है, उनको क्या पसंद है। तो आपको एक रिपोर्ट बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड का नाम, नीचे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये ऐसी रिपोर्ट तैयार हो गई। लेकिन उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। यू नीड टू मेंशन द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स in your presentation. You should only give a summary of what you observe in the responses given by many people. अब देखिए आपको जो सारे रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे आपकी शीट के, तो आपका कौन सा फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचता है, या आपके बारे में क्या पता है, या क्या लगता है उसको, ऐसी रिपोर्ट बनानी है। तो आपको उसका सिर्फ समरी, शॉर्ट समरी, अगर उसने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होगा तो शॉर्ट में लिखना है आपको। आपके फ्रेंड का नाम पहले कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद फिर शॉर्ट समरी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस। योर प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियरली show what many or most people enjoy, appreciate, fear, etc. What only some of them mention and what only one or two mention. अब जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे 3 लोग, तो उन तीनों को सेम चीज़ें पता होंगी, तो फिर आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रेयस, स्वयं एंड आदित्य आर 3 बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उन तीनों को अपने एक दूसरे के बारे में सब चीज़ें पता होंगी। फॉर एग्जांपल श्रेयस के बारे में सब चीज़ें पता होंगी, तो वो तीनों एक दूसरे के बारे में जो चीज़ें पता है वही लिखेंगे, तो सेम चीज़ें हो गई। सो इन योर रिपोर्ट यू शुड राइट लाइक दिस: श्रेयस, स्वयं एंड आदित्य writes about my favorite personality is Virat Kohli, and I like him the most his strength or his lifestyle. अब ये चीज़ें इन सबको पता है तो तीनों सेम ही लिखेंगे, तो इन तीनों का नाम एक साथ लिख के इन तीनों ने यही चीज़ें लिखी है ऐसा लिखना। शॉर्ट समरी: if necessary you may point out what you not mentioned by any of the people. For example, you may say it appears that nobody is afraid of examinations as no one has included them in things they fear. अब फॉर एग्जाम्पल थिंग्स द फियर, अब सबने अपने अपने, मैं कॉकरोच से डरता हूँ, मैं माउस से डरता हूँ, ऐसा लिखे होंगे, लेकिन किसी ने एग्जामिनेशन का नाम नहीं लिया। लेकिन in reality everyone is afraid of examination. You can write in comic way means आप थोड़ा सा फनी भी उस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। यू शुड ऑल्सो मैंशन वॉट यू फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द रिस्पॉन्सेज एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। एट द एंड you can write what you most liked or what you found most interesting in your presentation. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंसर किसका था, तो वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। यू मस्ट टेक केयर ऑफ टू सी दैट you do not hurt anyone's feeling when you get sheets filled or when
you make your presentation. Remember that these are your friends and you should not hurt them. This language oriented project, and therefore it is necessary that students do it independently using many language skills like approaching people politely, putting together the information gathered under the proper categories in a relevant manner. So here it is written that you should do this activity independently without anyone's help. I have explained it very nicely, and you have to make one report. First of all, you have to share this page with your friends and collect the all information about yourself and what your friends think about yourself, and you have to make one report including these points. Okay, now these reports should come to me and I will give personal remarks to each and everyone's presentations report. Okay, so this was your homework of this chapter, and today we are going to see another chapter, and that is unit number 2. Today we are going to start our unit number 2, and this is not a chapter, this is a poem that looks like a chapter. So this, first of all, I will teach you how to pronounce this word. This is a very big word. So the triantiwontigongolope. The triantiwontigongolope. This is the word. Here you can make pieces of these words and then you can pronounce. You know triangle, so the first 4 letters are taken from triangle. Triantiwontigongolope. Triantiwontigongolope. Here the way to pronounce this word. The triantiwontigongolope. This is the poem name, and this is one insect. Here you can see in this picture. There is a very funny insect that you do not often spay. Means there is a very funny insect. Insect means here you can see the small insects are there. So छोटे प्राणी जो होते हैं जैसे कीड़े वगैरह, तो वो वन ऑफ द फनी इंसेक्ट इज देयर एंड वी कैन सी दिस इंसेक्ट वेरी ऑफन. मीन्स वो जल्दी से दिखता नहीं है. And it isn't quite a spider and it isn't quite a fly. It looks like a spider and it looks like to a fly, but it is not spider and neither fly. It's something like beetle and little like a bee. Means it is something like a insect, an insect with wings which are hard, but it also looks like bee, but nothing like woolly grub and that climbs upon a tree. Means a young form of an insect that looks like a small fat worm. The insect body look like a fat worm, but it also has wings to fly, and a worm like larva of an insect. This is very funny insect. It is mixture of many insects. Its name is quite a hard one, but you will learn it soon, I hope. So try. We have to try to pronounce its word. Triantiwonti. So first of all, we have to make pieces of these words. Means first of all try, then triantiwontigongolope. Triantiwontigongolope. See, it is not much harder. We can pronounce it. Triantiwontigongolope. You can repeat after me while watching this video. Triantiwontigongolope. So this is triantiwontigongolope. That is the funny insect. Why it is funny? Because it is a mixture of many insects. It looks like a bee, like a beetle, quite like a fly, not a spider, not a woolly grub that climbs upon a tree. Means ये बहुत सारे insects का mixture है. It lives on weeds and wattle gum. Means
ये वीड्स, ये वीड्स के ऊपर रहता है। और वैटल गम मीन्स गम ऑब्टेन फ्रॉम ट्री इन फॉर्म ऑफ रेडिश टीयर्स और लम्ब्स। मीन्स ट्रीज के ऊपर जो गम रहता है ये उसमें उसके ऊपर रहता है। एंड हैज़ अ फनी फेस, और इसका फेस कैसा रहता है, फनी रहता है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट्स फेस इज वेरी फनी। इट्स एपेटाइट इज हार्टी मीन्स डिज़ायर फॉर फूड, वो हमेशा भूखा रहता है खाने के लिए। एंड इट्स मैनर ऑफ डिसग्रेस मीन्स वो डिसग्रेस अ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट ड्यू टू वंस ऑफ एक्शंस। मीन्स अगर आप उसको एक्शन कुछ दिखाओगे, कुछ परेशान करोगे, तो वो अपना रिएक्शन देगा, वो डिसग्रेसिंग एक्शंस का है। When first you come upon it, it will give you quite a scare मीन्स पहले आप उसको अचानक देखोगे तो आप थोड़े डर जाओगे, but when you look for it again you find it isn't there, and unless you call it softly it will stray away and mope मीन्स अगर हम उसको परेशान करेंगे तो वो हमको स्केयर करेगा, मीन्स कॉज ऑफ फियर बन जाएगा हमारे। लेकिन अगर हम उसको सॉफ्टली बुलाएंगे या प्यार से बुलाएंगे तो वो आपके साथ रहेगा भी और फील लो एंड स्पेंड योर टाइम टू डूइंग नथिंग फीलिंग वेरी सॉरी फॉर योर सेल्फ। लेकिन अगर हम उसके साथ देखते रहेंगे, उसको परेशान ना करते हुए अगर उसको ऐसे ही देखते रहेंगे या फिर उसको उसके साथ रहेंगे तो फिर उसको देख के हमको भी सैड फील होगा, और वो इसीलिए बहुत फनी है। ट्राइंटी वोंटी गोंगी पोल, सो ट्राई इट। ट्राइंटी वोंटी गोंगी लोप, ट्राइंटी वोंटी गोंगी लोप। So the next part is it trembles if you tickle it or tread upon its toes, to shake due to excitement or fatality. It trembles if you tickle it or tread upon its toes। अगर उसके पैरों से हम लोग परेशान करेंगे, उसके टोज से हम उसको परेशान करेंगे तो फिर वो शेक करने लगेगा अपने को एक्साइटमेंट की वजह से। अगर उसको गुदगुदी करेंगे तो वो हिलने लगेगा ज़ोर ज़ोर से, और उसके लाइट टच बाय समवन विथ इवोक्स लाफ्टर मीन्स अगर हम उसको थोड़ा सा ऐसे गुदगुदी करने की कोशिश करेंगे तो वो शेक करने लगेगा। अगर हम उसको ज़रा सा टच करेंगे तो वो हमको गुदगुदिया आके करने लगेगा। इट ट्रिम्बल्स इफ़ यू टिकल इट और थ्रेट अपॉन इट टोज। इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ द snubbish nose, an unpleasant look like or smile short fat means वो अर्ली राइजर नहीं है, वो सुबह उठता नहीं। बाकी इंसेक्ट्स कैसे बी सुबह सुबह जल्दी उठती है और बिजी रहती है, हनी बी बिजी रहती है, वैसे ये नहीं है। लेकिन उसकी नोज भी कैसी है, फनी है। इफ यू स्नीर एट इट और scold it, it will scuttle off in shame। अब देखो, अगर उसको हम देखते ही रहे तो फिर वो, या फिर उसको डांटना चिल्लाना चालू करे तो फिर वो शर्मा के या फिर गुस्सा होके भाग जाएगा। अगर उसको डांटेंगे तो फिर वो गुस्सा होके भाग जाएगा। बट इट पर्स क्वाइट प्राउडली इफ़ यू कॉल इट बाय इट्स नेम। लेकिन अगर हमने उसका नाम लेके, जो नाम बहुत डिफ़िकल्ट है लेने में, अगर वो नाम लेके उसको बुलाया तो फिर वो आपके पास रहेगा, और वो साउंड दैट कैट मेक्स म्याऊ म्याऊ करके आपके पास आ जाएगा। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस यू सेलिंग वैक्स एंड सोप मीन्स अगर आप उसको उसके नाम से, दैट इज़ ट्राइंटी वोंटी गोंगी लोप करके बुलाएंगे तो वो, अगर प्यार से बुलाएंगे तो वो आपके पास रहेगा, और वो ऐसे वैसे नहीं म्याऊ म्याऊ करके आएगा, पर करके। एंड ऑफर, और आप उसको सैंडविचेस भी ऑफ़र कर सकते हो। वो आपके सैंडविचेस भी ऑफ़र कर सकते हो जो आपने अपने लिए लाया है।
But of course, you haven't seen it, and truthfully confess that I haven't seen it either and don't know its address. For there isn't such an insect, though there really might have been. If trees and grass were purple and the sky was bottle green, just it's just a little joke of mine which you will forgive, I hope. Oh, triantiwontigongolope. So there is not any insect like this at all. This was a joke by the writer, and that's why he is laughing at the end. And if it was a joke like the other jokes, if the trees and grass were purple and the sky was bottle green, it's just a little joke of mine which you will forgive, I hope. So try try triantiwontigongolope. अगर स्काई और ट्रीज पर्पल होते और स्काई अपना ट्रीज और ग्रास पर्पल कलर के होते और स्काई बॉटल ग्रीन कलर का होता, तो जैसे वो जोक्स है वैसे ही ये इंसेक्ट का भी जोक है कि ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज जस्ट ए जोक। और ये सब आप भूल जाओगे, ऐसा राइटर होप कर रहा है, जो पोएट है वो होप कर रहा है। सो दिस वॉज द triantiwontigongolope. So we will read the poem again and you have to practice the name triantiwontigongolope. There is a very funny insect that you do not often spy, and it isn't quite a spider and isn't quite a fly. Spy. There is a very funny insect that you do not often spy, and it isn't quite a spider and it isn't quite a fly. It is something like a beetle and little like a bee, but nothing like woolly grub that climbs upon a tree. Its name is quite hard one, but you will learn it soon, I hope. So try it, triantiwontigongolope. It lives on weeds and wattle gum and has funny face. Its appetite is hearty and its manners a disgrace. When first you come upon it, it will give you a quite a scare, but when you look for it again, you find it isn't there. And unless you call it softly, it will stay away and mope. So try it, try triantiwontigongolope. It trembles if you tickle it or tread upon its toes. It is not an early riser, but it has snubbish nose. If you sneer at it or scold it, it will scuttle off in shame, but purrs and purrs quite proudly if you call it by its name, and offer it some sandwiches of selling wax and soap. So try it, triantiwontigongolope. But of course you haven't seen it, and I truthfully confess that I haven't seen it either. I don't know its address, for there isn't such an insect, though really might have been. If the trees and grass were purple and sky was bottle green, it's just a little joke of mine which you will forgive, I hope. So try triantiwontigongolope. So this was the poem by C.J. Dennis, and this was very funny poem. Hope you have understood that, and you have to complete question answers below the poem, and I am going to give you pictures and you have to answer it. So today's homework is to make a report, share this picture with your friends and ask them to answer the questions about yourself, and make one report without taking anyone's help and answer the questions of this poem. So do complete your homework.